So welcome to Swaraaj. Now, are you able to see the screen? Screen share हो चुकी? ना सर स्क्रीन आसन Okay. देखो ये आसुची? Okay. तो संगम एज जोटा कि हमर फर्स्ट अर्ली संगम एज जोटा हमर थिला संगम एज को जे तमिल रे तो हमर तीनटा डायनेस्टी कथा कहली तीनटा एम्पायर कथा कहली चोल चेरा पांड्या सेटा तो हमर थिला बहुत लंबा टाइम थिला बट संगम एज पर्टिकुलरली बिलोंग करे ए 3rd सेंचुरी बीसी रु 3rd सेंचुरी एडी पर्यंत जो पीरियड ता ताको संगम एज बोली कहवा जाय आ संगम एज काहे कहवा जाय बिकॉज़ तांकर जो पोएट्री तांकर जो पोएटिक फॉर्मेट लिटरेचर पई बोली कि ना सेटा संगम एज बोली कहवा जाय आ से पोएट्रिक फॉर्मेट जो मेन थीम थिला दैट इज रिगार्डिंग लव एंड वॉर बारंबार सेटा को लीड टू संगम सेति पई ताको बारंबार से जो लिटरेचर फेज टाको संगम एज बोली कहतला अगेन वन ऑफ द अनदर रीजन इज संगम एज रे गोटे पॉपुलर जिस थिला बिकॉज़ ऑफ द लिटरेचर ता बहुत फेमस थिला और लिटरेचर तमिल लैंग्वेज थिला तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज एवर एग्जिस्टेड सो संगम इज द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया तमिलकन खास करके तमिलनाडु जेहेतु तमिलनाडु करेंट तमिलनाडु एरियाटा सेटा तो तमिलनाडु रे सेटा फ्लोरिश करथिला एंड द संगम एज वाज ए कॉलेज or assemblies of Tamil poets held under royal patronage and believed to have 3 sangams जेमति हम 3टा काउंसिल थिला और 4टा काउंसिल थिला बुद्धिस्ट काउंसिल थिला सेमित आउ हमर जैन काउंसिल थिला सेमिति हमर संगम काउंसिल में 3टा बिलीव करा जे जोटा कि मदुराई रे ताकर मेनली थिला फर्स्ट संगम मतलब ओल्ड मदुराई तापरे कपड़ापुरम और थर्ड होचे न्यू मदुराई दीज आर द 3 संगम्स या ऊपर एतरे क्वेश्चन केबे आसेनी देखो which lasted to 9000 years and attended by 8598 poets. Okay, these are the poets, Sangam poets mane how 197 Pandya kings as patrons. So these kings were patronized these famous poets. So basically the Sangam age was broadly divided into 2 groups. What was a narrative, out of the didactic. What was narrative or didactic? So narrative texts are called Malkenaku. 18 major works consist Ettutogai, collection of 8 long poems, and Pottu Pottu, collection of 10 small poems. It is बहुत important. Pottu Pottu और Ettu Nagai. तमु जतले संगम लिटरेचर विषय रे पचाला संगम ए विषय रे पचाला यू हैव टू मेंशन दिस नेम्स. तो संगम जो एज ऊपर यूपीएससी भी आगु क्वेश्चन पचारछि तो प्राय क्वेश्चन ताकर नेम को नहीं पचारछि या माने कोन ता माने कोन तो एट्टू टोगाई एट्टू वन तो 8 जानछ एट्टू टोगाई होछि कलेक्शन ऑफ 8 लॉन्ग पोएम्स आउ पोट्टू पोट्टू इज small 10 small poems. Okay, these are the famous तांकर एंथोलॉजी बोली कहि परिबो किबा तांकर मेजर वर्क्स बोली कहि परिबो. इट होचे नैरेटिव टेक्स्ट. नैरेटिव टेक्स्ट आर कंसीडर्ड heroic poetry in which heroes and wars are glorified. They also give ideas of state formation of South India. गोटे साउथ इंडिया रो फिल्म आस्तिला चोळो ऊपर गोटे फिल्म आस्तिला जोटा कि ऐश्वर्या राय थिला जार मन थिबो रिसेंटली लास्ट 1 2 3 इयर्स भीतर आस्तिला गोटे फिल्म टे तार दीटे पार्ट आस्तिला तो सेठी भी देखथिबो एई ऊपर ही बनिचे संगम में चोला डायनेस्टी ऊपर फिल्म पांड्या और चोला ऊपर से फिल्मटा बनिचे केमती श्रीलंका रे सेटा बुद्धिस्ट को सेठी फ्लोरिश करा जायछि आ को रिलीजन्स देखाय तांकर से सोसाइटी तांकर से रूलिंग तांकर रूल तांकर जो हीरोइक तांकर जो थिला ए जो ए ग्लोरीफाई करा जाय फिल्म रे भी म तो फिल्म नाटा मन पड़नी जे देखिछो मन थिबो जदी कहबो देन इट होज तांकर नैरेटिव विषय दिस वाज अबाउट नैरेटिव आ डिडक्टिव टेक्स्ट वेर आल्सो कॉल्ड Kilkanakku. It is Melkanakku, it is Kilkanakku. 8 minor works consist of Tirukural and Naladiyar. This text prescribes a code of conduct of king and society and also mention about social group and occupation. बुझलो एटा किंग लो ग्लोरिफिकेशन करा छै एठी आ एठी कोन लिखाइ छै एठी ताकर सोसाइटी आ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द किंग मेंशन करा छै एटा छै डायडक्टिक टेक्स्ट आ सेटा होस हमर नैरेटिव टेक्स्ट ए दीटा डिफरेंस मन रख जेतेबेले तुमरा लिटरेचर संगम लिटरेचर पढला यू हैव टू मेंशन दिस थिंग्स आ खास करके एटू गोटाई आ पोट्टू पोट्टू आ यार तिरुकुरल आ नालादियर दीटा याको कह जे माने मेलकनक्कू आ याको कह जे किलकनक्कू. ओके दीज आर द थिंग्स यार 8 मेजर वर्क्स और 18 minor works. 18टा minor work, 8टा major work and collection of 8 long poems. That is and 10 small poems. या 8 major भितर 8टा long poem और 10टा small poem गला. तो ए एती मन रखिया पड़िबो ही.
They also mention about the social group and occupation deadly. Then second and 13th rock edit जोटे 13th rock edit जोटे कलिंग वार विषय भी लिखा है समझ जानिछ एटी कलिंग वार विषय भी लिखा है सेठी कोन नेम 4 नाइबरली किंगडम ऑफ साउथ इंडिया चोला चेरा और पांड्या विषय सेठी मेंशन कराई छै और सत्यपुत्रस तो चेरा बेसिकली चेरा केरला पुत्रम और मालावर जो केरला रे एस्टैब्लिश हेतिला और पांड्याटा होची पूरा साउथ इंडिया ओके पूरा एठी साउथ इंडिया और एठी होची चोला और एठी होची तंकर चेरा पांड्या एंड चोला दीस वर द एरियाज रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया तंकर एक्सपेंशन भी थिला अप टू तमिलनाडु और साउथ ईस्ट एशिया रे भी तंकर कंप्लीट एक्सपेंशन थिला तंकर गोटे स्ट्रांग नेवी सिस्टम नेवी भी थिला स्ट्रांग आर्मी और नेवल फोर्स भी थिला द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खारवेल किंग कलिंग मेंशंस तमिल किंगडम्स तो ओडिसा रो थिला ही बहुत सारा हमरो साउथ इंडिया से तो काफी रिलेशन थिला और हमरो जो खारवेल जो किंग थिले से भी अप टू एक्सट्रीम साउथ पर्यंत से तंकर एक्सपेंशन थिला द पीरियड रफली बिटवीन 3rd सेंचुरी बीसी 3rd सेंचुरी एडी नथिंग एल्स द एरिया लाइंग साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा इज नोन एज संगम पीरियड तो 3rd सेंचुरी बीसी 3rd सेंचुरी एडी को संगम पीरियड को जे आउथरे किछ मन रख खाली जोटा कि हमरो तुंगभद्रा रिवर तुंगभद्रा कोड अछि तुंगभद्राटा हमरो कर्नाटक रीजन रे अछि कर्नाटक रो पूरा नेकी पूरा साउथ पर्यंत तो जदी हम देखिबा एमती किसी साउथ इंडिया था तो हमरो एटू कर्नाटक एमती था ओके एटी आंध्र ये तमिलनाडु पळे आसे तो पाखापाखि एटी हला चोला पूरा चोला एरिया दिस इज पांड्या एरिया एंड दिस इज योर केरला चेरा तो ए रीजन बेसिकली चोला कर थिला चोला भी एक्सपांड करथिले काफी ऊपर को बध्य हम पढिबे ताकर विषय रे बट एटा 3rd सेंचुरी बीसी 3rd सेंचुरी एडी पर्यंत ए एरिया थिला okay it has been named after Sangam academics held during the royal patronage of Pandya kings Madurai which we already read eminent scholar assembled और ताकर संगम काउंसिल भी हितिला सेटा पुनी रिपीट कराई छि दिस लिटरेरी वर्क्स वर अर्लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ द्राविडियन लिटरेचर according to Tamil legends there were 3 sangams which we already read popularly called मुचंगम बोली कह जे संगम को मुचंगम मुदीरे देखो अलग अलग जगह नहीं उठी कांची काळे कोडा मिस हेजियो बोली ना तंग आ एक्स्ट्रा कोडी देखिया पड़िबोनी ओके द फर्स्ट संगम बिलोंग टू मदुरै सेकंड संगम कपड़ापुरम ओनली तलगप्पियर सर्वाइव्स फ्रॉम दिस और थर्ड संगम हितला मदुरै ए संगम जो हितला से संगम गुडा कर मध्य लार्जली कंट्रीब्यूट फॉर द संगम लिटरेचर्स आज जो एते हाईलाइट हिचे बिकॉज़ ऑफ दिस संगम councils then introduction to chera chola और पांड्या तो बिफोर दैट हम टिके देख देबा लिटरेचर गुडा कोन एटा एग्जाम रे पढे बहुत थर पढी छी शिलापतिकरम बाय लिंगो आर्टिकल एटा मन रखो एटा बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिसटा इट इज अबाउट लव अफेयर ऑफ कोवलन कन्नगी एंड माधवी कन्नगी होचंदी केरला रो लेटर द कन्नगी कल्ट डेवलप्ड इन साउथ इंडिया ओके शिलापतिकरम बाय इलंगो आर्टिकल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आगुरु बहुत थर एग्जाम रे पढी छी यूपीएससी रे तो पढी छी आ बहुत जन मैच द फॉलोइंग करी यूपीएससी रे मते जति जणा अछि 5 थर खंड पढतिबो एटा गोटे शिलापतिकरम गोटे तो लव अफेयर बिटवीन कोवलन एंड कन्नगी एंड माधवी then Manimekkallai by Sitarai Satanar this is again the famous first eta second eta as it is mon rakhe padibo continues in the history of Silapadikaran in the then continues the story of Silapadikaran in the next generation in which Manimekkallai is the daughter of Madhavi and Kovalan याकर ही कंटिन्यू कर जेठी तो याको भीतर जो पुत्री संतान ताकर संतान हिची संतति तो ताकर अगेन ताको लव स्टोरी विषय हिची तो Manimekkallai written by एटा मन रखो हैला सत्तलाई सत्तनार as it is मन रखो शिलापतिकरम by इलंगवाडिकल Manimekkallai by सत्तनाई सत्तनार ओके यार होची पार्ट 2 एटा होची पार्ट 1 एटा होची पार्ट 2 देन तोलकप्पियम by तोलकप्पियर एटा कोन वाज प्रोडक्ट ऑफ सेकंड संगम एटा ओनली जो सर्वाइव टेक्स्ट बोली को होची बेसिकली वर्क ऑफ तमिल ग्रामर ओके तोलकप्पियम होची गोटे ग्रामर याकु लिखिचंदी तोलकप्पियर third most important then as Tirukural deals with the philosophy and wise maxim was written by Tiruvalluvar
तिरुवल्लुवर इज द फेमस तमिल राइटर ये होचन फोर्थ ए चारिटा तुमको जहां भी मन रखिया पड़ो शिलापतिकरण मणिमेक्कलाई तोलकपियम एंड तोलकपियम एंड तिरुकुराल ओके और तिरुवल्लुवर याकर नाम तो बहुत सुनथिबो हिस्ट्री भी बहुत पॉपुलर तो यही चार्टा होचन ताकर हमर जदी फकीर मोहन सेनापति कहबा ओडिया रे किबा हम कहबा उपेंद्र भंज समिति तमिल जदी फेमस ना चार्टा कहबा ताले तिरुवल्लुवर उड आसीबे ओके इलिंगु अडिगल आसीबे सत्तनार आसीबे आउट होचन तोलकपियर दीज आर द फोर इंपोर्टेंट पोएम पोएट कहि परिबो और लिटरेट हीरोज भी कहि परिबो देन संगम इज डिस्कस थ्री मेन किंगडम गोटे चोला पांड्या चेरा एबे देखिले एंड अबाउट देयर राइवलरी ताका भीतर कांस्टेंटली वारफेयर होथाय हां पावर टसल होथाय देन देखिया अदर सोर्सेस आउ कोन सोर्सेस अछि The Sangam literature major sources given details of Sangam age. The Sangam literature includes Ettugai, eta पढ़ले पोट्टु and आमे अलगा ना पढ़थिले एटी ओके एनीवे देन पोट्टी नेकी कन्नाकु and two epics named Silapatikaran and Manimekkalai we already read about this तोलकपियम भी पढ़ले आमे considered earliest Tamil literature जोटा कि ग्रामर ऊपर थिला एटु गोटाई 8 एंथोलॉजीज वी ऑलरेडी रेड 8 एंथोलॉजी रे ना बेड देछि ताको डी भलसे पढ़ देबो ओके देन आसला द पोटु एडिट 10 से 10 टा भी एठी अछि क्लियरली आ तुम स्क्रीनशॉट नै जो पाइबो तो एठी ताको डिटेल नेम पाइबो बट एटा कोनसे एग्जाम रे पढ़नी जेतु हम खाली पोटु आ एटु गोटाई मन रख दियो खाली एठी 8 टा और पोटु रे 10 टा जहा देखिले मु दु तीन टा इंस्टीट्यूट रो जिंसन नि पळे आसी तो दागा हमर कोन जिंस बाकी रहबो जेंती The two epic Silapatikaran was written by Elingu Adiler and Manimekkalai by Satana same jinsa same repeat हला या माने या अर्थ होची आठो अधिक किछि पाठ नै एतिकी पाठ तुम जहा पढिबो एतिकी जिंस आ ओडा तमिलनाडु एनसीईआरटी रे भी एतिकी ही अछि बेसिक किछि नाही सेठी देन आसी गला Silapatikaran Elingu Adiler ओके अदर सोर्सेस ओके अदर सोर्सेस जो देखिबो ग्रीस रो मेगास्थेनिस जो लिखचंती हमर इंडिका सेठी ओके स्ट्राबो प्लिनी टोटेमी ये ज्योग्राफी समथिंग लिखचंती गोटे तांकर भी आ ये लिखचंती इंडिका एगुडा मन रखते हले ए जिंसुडा पढते गोटे लिस्ट दे दी पूरा जति की ऑथर अछंती ताकर वर्क गुडा गोटे लिस्ट हम दे दी पूरा ता घोसी पायो पडियो किछि आ तार किछि नै से माने वेस्टर्न साउथ इंडिया विषय देछंती अशोकंकर अछि आ हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खाराबेला आल्सो मेंशन अबाउट दिस संगम एज संगम रो पॉलिटी के देख देबा चोला फर्स्ट देखिए तब चेरा और पांड्या भी देख देबा चोला रो कैपिटल होची कावेरीपट्टनम पुहार एटा यूपीएससी रे लास्ट ईयर पढ़थिला पुहार और युरायुर ए दिटा पढ़थिला ओके ये कोन करंती एगुडा सब हमरो कोस्टल और पोर्ट भी थिला कोस्टल एरिया और पोस्टल और हमरो पोस्ट एरिया जो पोर्ट एरिया भी थिला एठी बहुत कॉटन ट्रेड भी हुए फेमस फॉर कॉटन ट्रेड पोम पुहार और उरायुर ये कावेरीपट्टनम लिखाइ छी ना कावेरीपट्टनम माने पूरा कावेरी और तमे सेही बॉर्डर एरियाटा और उरायुर मध्य कॉटन ट्रेड जो हुए ये भी तमरो पाइबो हम जो तिरुचिरापल्ली अछि सेही पाखा भी एरिया उडा सब द टेरिटरी दीज आर द टू एरियाज मन रखो कैपिटल गोटे होची पुहार और कावेरीपट्टनम और सेकंड होची उरायुर श्रीरंगपट्टनम सुनथिबो श्रीरंगपट्टनम से एग्जैक्टली श्रीरंगम टेंपल अछि से पाखरे दीज आर द टू एरियाज ऑफ दोस तमिलनाडु पूरा साउथ के जिवो जस्ट मदुराई अछि एठी मदुराई टिके ऊपर खाली ता ऊपर कोयंबटूर रह गेला ता ऊपर तम चेन्नई ए पाखर रह गेला तो होल तमिलनाडु जो जिवो ए एरिया पूरा मिडिल टू टिके तळो पळे आसीबो एठी होची हमर तिरुचिरापल्ली एरिया होची पुहार आ तम पाइ जिवो सिटी उरायुर जदि हम पार डायग्राम थिबो देखाइ देबी तुमको देखु छ मन थिबो बोधे देखि दे उरायुर पूरा एठी मेंशन अछि तो पांड्या रे कैपिटल थिला एठी मदुराई ए एरिया रे मदुराई अछि बिल्कुल पांड्या एपट रामेश्वरम एटा होची रामेश्वरम तमरो तो एठी मदुराई तुम जेतल रामेश्वरम जिवो मदुराई हेगिना जिवो ओके वैगाई रिवर अछि तो एठी मदुराई देछि तो ए पाखरो ओके देन हला उरायुर होची ए एरियाटा आ पुहार भी ए पाखा पाखी एरिया रीजन तो ये होची चोला देन पांड्या ये होची चेरा रीजन तमरो चोरा माने केरला रीजन टा जोरा को चेरा रीजन बोली कहा जाय तांकर कुटनाड आ कुटनाड कोन जो राइस फार्मिंग हुए जोटा कि हमर सी लेवल रु तळको सेठी राइस फार्मिंग हुए दैट इज वाइ सेटा फेमस अछि किछि दिन वाला न्यूज रे भी रहउछ देन देखिबे
चोलार एम्ब्लेम होची टाइगर एटा मन रखिबा कावेरीपत्तनम उरायूर आर्किमेडू जोटा कि हमर पुडुचेरी बोली कहछि वर्तमान बिकेम फेमस सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री अंडर चोलास मन रहले तीनटा एरिया एल्लारा वाज द अर्लीस्ट नोन किंग एल्लारा द नेम आउट कारिकेलम ओके से जो तमिल फिल्म कहउथली कोन उड आस्थिला ऐश्वर्या राय आ विक्रम बद थिला तो सेठी भी ए किंग विषय दिखाई कारिकेलम Karikela was the greatest king. He founded Puhar and constructed dam across Kaveri river. Clear? The Cholas controlled the central and northern part of Tamil Nadu. The core area of rule was Kaveri Delta, later known as Cholamandalam. The capital Urayur near Tiruchirappalli town and Puhar near Kaveri Patnam. एटा कहिलो उरायूर टा सही एग्जैक्टली तिरुचिरा एबे ए शहरटा एते बड़ नाही वर्तमान त्रिची टाउन हे बड़ हे देन पुहार जोटे कावेरी पट्टनम वाज द अल्टरनेटिव रॉयल रेसिडेंस ऑफ द चीफ पोर्ट टाउन देन टाइगर ताके एम्ब्लेम थिला एटी डिस्कस हेची टाइगर वाज द एम्ब्लेम ओके ताकर रोड एफिशिएंट नाबी थिला आज वी डिस्कस्ड एंड किंग कैरिकेला वाज द फेमस संगम किंग जोटा कि चोलार थिले पर चोलार आसी हमरो चोला किंग पर आसंदी पल्लव डायनेस्टी भी बिल्ड हेतिला बट सेतेबेला हमें वर्तमान 300 बीसी रो 380 पर्यंत डिस्कस करछन देन Pattinapalai portrays his life and military conquest. He is another king. Then many Sangam poems mention the battle of Veni where he defeated the confederacy of Chera Pandya and 11 minor chieftains using the Pattinapalai. Then Karikala's military achievements made him overlord in the whole Tamil region. Of the time, trade and commerce flourished during the region. He founded the port city Puhar. Puhar होची गोटे पोर्ट सिटी एटा लास्ट देखि देबो तमे 2024 बोधे और 2023 रे यूपीएससी रे डायरेक्ट क्वेश्चन आछि ए जो तळे जो सिटी मान दिया छथि दे आर व्हाट मेजर पोर्ट सिटी ना कैपिटल सिटी और एक्स वाई जेड ऊपर थिला क्वेश्चन तो ए रीजन गुडा को तांकर नेम गुडा को लिटरेचर गुडा को सुनी की मन रखि दियो नाले कोड नोट कर दियो किबा एटा स्क्रीनशॉट नै तमे रखो वर्तमान कि एबे भी नोट कर परिबो सो दीज आर द एतिकी ही जिंस जानियार अछि ताको जे एक्स्ट्रा जानि पे तमिलनाडु एनसीईआरटी बुक अछि जो एक्स्ट्रा नॉलेज पे ना बट मिनिमम एति जानिबाटा इंपोर्टेंट मु भाबे देन आसला एटा चोला विषय पढले पांड्या आउट तळो पळे आसे तां कैपिटल होछि मदुराई ते साउदर्न जो साउदर्न और साउदर्न ईस्ट पेनिनसुला ऑफ टेरिटरी एडी पेनिनसुला कांगी लिखा छि ना जे पूरा एरियाटा थिले ना जोटा कि हमरो रामेश्वरम ओके ए रामनाथपुरम ए जे डिस्ट्रिक्ट गुडा सब सेटे बिलोंग करिया जे पे तांको ए एरिया भी तांकर बोली थिला पांड्यार अंडर रे थिला तांको एम्ब्लेम होछि फिश कार्प फिश चोलार एम्ब्लेम कोन थिला चोला थिला टाइगर यांकर फिश देन पांड्या had trade relation with Romans eta मन रख and they were first mentioned by Megasthenes first तांको पांड्या मान को मेंशन करते they also find mention in the Ramayana Mahabharata जो लिखा अछि सेथि पांड्या मान को मेंशन अछि and Nedunjilyan known as his kingdom's wealth and prosperity was the most noteworthy Pandya ruler okay Pandya ruler ke Nedunjilyan the Pandya ruled from Madurai and Madurai was the capital as we understood then asigala Korkai was the main port yanko port na hochi Korkai tankar port na hochi Puhar confluence with Tamrapani with the West Bengal to eta West Bengal Tamrapani pakha thila mane केमिति पोर्टा सेटला मु जानि पा तमरपानी तो रहले बेंगल रे एनीवे कोरकाई वाज द मेन पोर्ट लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तमरपानी विद द बेंगल द बे ऑफ बंगाल इट वाज फेमस फॉर पर्ल फिशरी एंड चंक डाइविंग ओके द एम्ब्लेम वाज फिश दे पैट्रोनाइज्ड तमिल संगम एंड फैसिलिटेटेड कंपाइलेशन ऑफ संगम poems this ruler kept regular army trade and prosperous in the and their polls were famous सती सिस्टम थिला कास्ट सिस्टम थिला आइडल वर्शिप एटा कॉमन थिला एंड विडो वर ट्रीटेड बैडली तो वुमेन कंडीशन बेसिकली सेठी खराब थिला आ जेंति एटा जो देखिबो पूरा इक्विवेलेंट टू द लेटर वैदिक पीरियड ओके तो मन रह जो ए सिस्टम सब बोले सिमिलर तांकर भी वुमेन मान को बैड ट्रीट लेटर वैदिक पीरियड तांकर कंडीशन वर्स ही गला विडोज मान ट्रीटेड बैडली सती सिस्टम थिला कास्ट सिस्टम भी रिजिड ही गला आ
आइडल वर्शिप तांकर थिला तो एक्जेक्टली ए सब जिंस लेटर वैदिक पीरियड रे थिला एडा सब कॉमन तमे ए पॉइंट्स उडा सब लिख परिबो देन आसिला दे अडॉप्टेड वैदिक रिलीजन एंड सैक्रिफाइस एंड पैट्रोनेज ब्राह्मण priest their power declined with the invasion of tribes called Kalavras को invasion रे तांको पावर धीरे धीरे कमी गसिला एटा मन रखे एनाटा then आसिगला after Sangam age this dynasty lost its significance and more than a century only to rise once again during the 6th century again 6th century amaro उठतिला पांड्या जो हां पांड्यास again rise in the 6th century मझे से totally 3rd century AD परे 300 AD परे से टोटली 400 AD पर से जमा नथिले देन आसला चेरा होचंदी केरला पुत्र बोली कहा जाए ओके तांकर जो कैपिटल है वंजी और मालाबार मन रखो टेरिटरी होची वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ पांड्या तांकर जो एम्ब्लेम होची बो एंड एरो वो टाइगर हैला फिश और कार्प हे गला नेक्स्ट होची बो एंड एरो देन संगुटवन ये होचन तांकर फेमस राजा ओके रेड चेरास वर द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर संगुटन he established the Kannagi and Pattini cult Kannagi became the object of worship Kannagi ए होचंती वर्तमान गोटे से जो प्रिंसेस नथिले से नहंती से नेम रो Kannagi देवी जने तांको कल्ट जेंदा जगन्नाथ देव आम पूजा को जगन्नाथ कल्ट ओटे सारे कल्ट तो Kannagi he was the first king Senguttan okay the first king from South India to send ambassador to China see this is the very significant thing तो मन रखो he enjoyed reputation of being highly ethical and virtuous Gajabahu was his contemporary in Sri Lanka then Karur and Muziripatnam were the important centers of international trade Karur and Muziripatnam then asigal tamara Romans settled at Muziripatnam तो मुजिरी बोली भी जगह जानती हो जोटा कि आमर वर्तमान कोची ए रीजन टा देन आई सेड द टेंपल ऑफ रोमन एम्परर ऑगस्टस वाज कंस्ट्रक्टेड हियर देन आई सेड द चेरा कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला एंड कोंगू रीजन ऑफ तमिलनाडु जोटा कि आमर नीलगिरी पर्वत अछि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट भी तमिलनाडु अछि तो जस्ट इटा होछि केरला और तमिलनाडु टिके वेस्टर्न एरिया टा okay ida hotango chera area thila then asila Vanji was the capital and port on the west Musiri and Thondi were under their control emblem bone au arrow janle Pugalur inscription जोटे कि जाना चाहिए चेरा को विषय रे the chera owed importance trade with Romans okay understood and Senguttan the red chera or good chera belonged to the 2nd century AD एटा मन रखो 2nd century AD टाइम रे okay he was the famous his military achievement chronicle has been chronicled in the epic Silapati Karan and details about expedition of Himalaya where he defeated many North Indian rulers so he is known to defeat the North Indian ruler also and the Senguttan introduced Pattini cult okay worship of Kannagi the ideal wife Pattini माने एटा पत्नी गुरु में आछे एटा what is it worship of Kannagi an ideal wife as the ideal wife in the Tamil Nadu he was first to send embassy to China from South India this is also a point to remember then asile administration विषय टी संगम मेजर देखि देबा चेला चोरा पांड्या तीनटा जाक सला पर वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन होची देखो एटा खाली मन मंडलम थिले तांकर किंगडम जो बड़ किंगडम थिले ये डेवलप डिवाइडेड इनटू मंडलम रो नाडु होची तां प्रोविंस देन उरु होची टाउन देन सिरूर स्मॉल विलेज देन पेरूर बिग विलेज एडा मन रखिया पड़े पेरूर मान होची बिग विलेज सिरूर होची स्मॉल विलेज एस फॉर स्मॉल ओके देन होची उरु होची टाउन और विलेज को भी उरु कहा जाए देन होची नाडु ऊपर होची मंडलम आ मंडलम ऊपर पूरा किंगडम होल किंगडम टा दिस वाज द हायरार्किकल सेटअप और डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप बोली भी कहि परिबो देन आसिला किंग वाज कॉल्ड मन्नन वेंदन कोरायन और इरेवन he was the center of administration Avai was the court of monarch okay तंगो monarch रो जो कोर्ट अछि
तो यहाँ बेसिकली गोटे मोनार्किकल सेटअप थिला आ किंग होचन सब इंपोर्टेंट आ अवाई होची द कोर्ट ऑफ अ क्राउन मोनार्क देन आसीगला आमाइचार होचंती मिनिस्टर जोटा अमात्य कहूचे सेठी हमर जोटी कहथले हम कोठी मौर्य रे अमात्य कहथले आगत हमरे अमाइचार एंड अंथनर होचन प्रीस्ट हम सेठी पुरोहित कहथले एठी होची अंथनर दूतर एनवॉयस जो दूत थिले देन सेनापतियार मिलिटरी कमांड एटा सेनापति बोली कहथले अरर जोटा कि स्पाइस मतलब 5 इंपोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द किंग ओके एडमिनिस्ट्रेशन विषय एति मन रखले देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखिबा कराई एटा मन रख रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टर्म बडा पड़ जाए यूपीएससी रे खास करके कराई मान होचे लैंड टैक्स उलगु मान होचे कस्टम्स ड्यूटी उराऊ मान होचे फोर्स्ड गिफ्ट और एक्स्ट्रा डिमांड एंड इराई होचे ट्रिब्यूट पेड टू बाय फ्यूडेटरीज एंड वेरियर होचे टैक्स कलेक्टर्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट मन किछि आइछ मन उलगु मान होचे कस्टम ड्यूटीज ओके जोरा बाहर आसिले जिंस ताले तार ड्यूटी निया दैट इज कस्टम ड्यूटी देन कराई होचे लैंड टैक्स ओके फोर्स्ड गिफ्ट और एक्स्ट्रा डिमांड होची इराहु देन होची इराई होची ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडेटरीज एंड वेरियर टैक्स कलेक्टर्स एति पर हम इकोनॉमी विषय बुझिया संगम इकोनॉमी कोन थिला फर्स्ट तो एग्रीकल्चर तो मेन तब ट्रेड भी होतुला कोन लिखा है द रीजन ऑफ संगम एज मेंशन द प्रोस्पेरस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड पीपल वेर पास्टोरलिस्ट हंटर फिशरमैन ऑल्दो दे आल्सो प्रोड्यूस राइस आइटम कोड एक्सपोर्ट होतुला मसलिन ग्लास बीड्स पर्ल्स सैंडलवुड परफ्यूम ब्लैक पेपर जोटा कि यवन प्रिय बोली कह होची हम काली पढ़थिले ओके यवन माने जो ग्रीक माने पेपर पई बहुत रिलेशन रखथिले अंक सहित देन टॉर्टोइस शेल मेडिसिन्स एनिमल एंड बर्ड्स दिस वर द फेमस एक्सपोर्ट ट्रेड्स और इंपोर्ट कोन करथिले गोल्ड सिल्वर मूंगा वाइन ऑलिव ऑयल ड्राई फ्रूट्स रॉ ग्लास आइवरी कॉपर टिन मेडिसिन एंड स्लेव्स Gold and silver in huge quantities were brought into India and made the trade greatly in favor of India. Then Pliny, the Roman author and member of Senate, in his Naturalis Historia, Naturalis Historia collection Pliny, okay, Roman poet. मन रख जहाँ भी यहाँ पड़ जाए से कौटी कहीं प्लिनी अच्छा स्ट्राबो अच्छा ओके देन आसगले मेगास्थेनिस अच्छा सब कन्फ्यूज हो मेगास्थेनिस ग्रीक वाला प्लिनी होते रोमान रोमान माने बर्तमान इटली रोमान एम्पायर रोम तो अच्छी जानते किंतु से इटली आउ से एरिया पूरा टोटली देन author member the senate natural historia regrets the drain out of huge amount of gold and silver then Ptolemy in his geography এটা দেখিছিলে আমি Ptolemy র geography and Strabo in his geographical or geography also describes this trade imbalance of Roman empire काहे से कहले कि सब हमर से माने मसला दे खाली गोलमरिच बिकी बिकी माने सुना नथले चिंता करो एते काहे बोलथिले बिकॉज़ गोलमरिच देख हम घर खाउछंती पीपल एपटे गोलमरिच दउथले सेपटे सुना नहीं आसुथले तो इमेजिन करो केमि तंग ड्रेन होते तोळे सो इंडिया वाज दैट वेल्दी तेजपत्र अच्छा मु जाइथिली केरल थरे ओके सेठी गोटे गार्डन देखली स्पाइस गार्डन कहला यहाँ ये हूँ स्टोरी 2017 रो कि 2016 रो स्टोरी एनीवे तो से गोटे गार्डन थिला स्पाइस गार्डन रे गोटे गछ थिला एटा को जगह एटा होची मुनार तुम सुनथिबो ये स्पाइस गार्डन से तुम जीव देखियो स्पाइस गार्डन रे गछ थिला सेही गछर पत्र होची हम तेजपत्र ओके सेही गछर जो मंजी होची गोलमरिच सेही गछर जो छाल होची से होची हम जे खाउ डालचीनी आ सेही गछर फूल कढ़ा हो फूल से आम जो बिक्री कर कौन से जो कढ़ा होची लवंग ओडिया जो आम खाऊ आ जो फूलटा गोटे होची सी होची तुम आम जो पकांती अनासी फूल ना कौन से गोटे गचर सब फड़ी जाऊँगी से बिक्री बिक्री मैंने सुना नहीं आसुले आमती हजार हजार गछ से पूरा पहाड़ एरिया ए पहाड़ सेमती केते गछ लगी माने तार एमती खाली हो जाए से पकईदे हो मंजी से गुड़ा बिक्री बिक्री कर धनी जाती माने इंडिया से कहते लैंड ऑफ गोल्ड कहीं ये मटी एगुड़ा फल हुए सब जिन गोटे गचर एत मसला सब हो जाती बिक्री कर सुना बदल सुना दौले से रोमान एम्पायर सरला ब्लैक पेपर ये सब सरला हुई गोल्डन क्वांटिटी आसीगला जोग्राफिया अच्छा डिस्कवरी ऑफ मॉनसून विंड बाय हिप्पालस अराउंड 400 AD ओके कॉमन एरा फर्दर प्रमोटेड द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट ओके मॉनसून के डिस्कवर कर देखि दियो हिप्पालस
Then Tamil Mandalam served as zone of interaction of silk trade and with China. Land revenue, custom duty of foreign trade and booty captured in war were main source of income. There were the the source of income thila. So you can easily remember these things. खाली evidence गुड़ा लिख दो कितना वही वही लिखते ले जो दी means रे पढ़ला तो से भी खुशी है. Then society of Sangam age. Tamil people were primarily pastoral and traces of early megalith life appears in the Sangam text. Social classes जो देखिए आरासर ये होचे ruling class. कड़ासियर होचे lower class people. अंथनार होचंदी priest. वेनिगर होचंदी ट्रेड एंड कॉमर्स वाला आ वेलालार होचंदी एग्रीकल्चर एटा एग्जाम रे यूपीएससी रे पढिछि ऑलरेडी वेलालार वर्डटा आगु पढिछि वेलालार माने एग्रीकल्चर जो माने करंती किबा फार्मर को वेलालार बोली कहा जाय ओके आउडा ये पढबे रूलिंग क्लास को होछि आरासर कालासियर होछि लोअर क्लास पीपल अंथनार होछि प्रीस्ट वेनिगर होछि ट्रेड एंड कॉमर्स वाला सब आरासर कालासियर Anthanars, vinegar, last वाला Velalar or agriculturist. In the Marutam region, Velalar and the rich peasants were dominant. Courage, creativity and spirituality of women was respected in Sangam society. Avayar, Nachalayar, and Kokai Padinar were the famous women poets. These are the famous women poets. Tinta naam man rakho am paigala thi odochi Avayar gode Nachalayar और third होचंदी Kokai Padinar. These are the famous women poet. Vedic time रे सेम थिला हमर के गार्गी मन रखो ना बड़ा भूलनी जति पारुछि रिवाइज कर दिए love marriage or women were free to choose their partners but widow were treated badly and sati was prevalent खाली एटा डिफरेंस खाली एटी गुडी वुमेन मान निजे पार्टनर को चूज करिवार अनुमति थिला किबा वर एक्सेप्टेड बट विडो जदी हे गेला पर समान को ब्रेडली और ट्रीट करथला सती भी देखिएको मिलथिला देन some social and other primitive tribal groups were lived in Sangam age जो सोशल ग्रुप थे ये होचंदी परथवर पनार एइनार कदंबर मुरावर पुलैयर ये सब होचंदी तंकर सोशल ग्रुप गुडा को आ तोडास इरुलास नागास येडर्स एमाने एबे भी होचंदी इरुला ट्राइब होचंदी तोडा ट्राइब होचंदी ये सब ट्राइबल ग्रुप गुडा देखियो मिलथुला तो एथिरा किछि एक्स्ट्रा नै संगम सोसाइटी रे सेही 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड थिला गोटे होची कुरिंजी जोटा कि हिली ट्रांसपोर्ट कुरिंजी कहतुला नील कुरिंजी सुनथिबो तमे नीलगिरी हुए तो हिली ट्रैक्ट को नील कुरिंजी बोली कहतला मुलाई होजंदी पास्टोरल मुरुदम एग्रीकल्चरल नेडल कोस्टल और पलाई होजे डेजर्ट एति की होची तंग जिंस एंड तोलागपियम वाज आल्सो रेफर टू फोर कास्ट तोलागपियम रे चारटा कास्ट मेंशन अछि गोटे आरासर अंथनार विनेगर और होची वेलालर Then ancient primitive tribes Toda, Irula, Naga, Vedar were lived in this period. Same is repeated. Women man with the same likha kichi alga nai. A woman poet be Manaka Avaya, Nachalier and Kakapadinier. These are the famous three women poets. रिलीजन देखिए मुरुगन कार्तिक मुसान मुरुगन कोनते एबे भी जमा पूजा करछन मोस्ट इंपोर्टेंट डेटी ओके मुरुगन डेटी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड नाडुकल hero stone was also commonly worshipped remembering the bravery of the soldier then kurunji mulai murudam nedal palai are the 5 types of land mentioned in tolagapiyam each type of land was associated with distinct activity and related kurunji जेटा कि हंटिंग पे यूज हुए और सेठी मुरुगन पूजा हुए मुलाई कैटल रियरिंग सेठी विष्णु तंकर पूजा मुरुडेम जो कि एग्रीकल्चर इंद्र को पूजा करते नेडल फिशिंग सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पलाई होचे रबर
रबरी आउ करावाई जर्नलिज्म एंड बुद्धिज्म आल्सो फॉलोइस्ट एते मन रखिया दरकार नहीं खाली ना गुडा जदी मन रखु मोर देन इनफ ओके या मीनिंग जदी पचार देला ता छडा आ किछि एथरे इंपोर्टेंट वर्तमान नाही नेक्स्ट देखिए द प्राइमरी deity of Sangam was Murugan okay आउ किछि नाही सेम से रिपीट हेछि the worship of Murugan was having a ancient origin and festival related to god Murugan was mentioned in Sangam literature Murugan was honored with 6 abodes known as Arupadai Vidu other gods worshipped during Sangam was Mayon जे कि विष्णु को मायन कहा जाए वेदन को इंद्रन कहा जाए वरुणन और कोरावाई so these are the gods of Sangam is the hero stone एटा पढ़िले then आसीगला इकोनॉमी ऑफ संगम एग्रीकल्चर चीफ ऑक्युपेशन नथिंग एल्स पोर्ट सिटी पुहार उरायूर the other significant parts of commercial activity of Tondi Musri Korai Arkimedu and Maracana I mean 4-5 लोकेशन मन रखते हैं कौन सी यदि क्वेश्चन आसले तो काम आसी ओडा then many gold and silver ए ट्रांसफर तो होतले मेजर एक्सपोर्ट संग होची फैब्रिक्स कॉटन फैब्रिक्स स्पाइसेस पेपर जिंजर कार्डामम सिनामम ई सब गोटे गोटे घर गछरे सब पड़ी जाए देन हला टर्मरिक आइवरी प्रोडक्ट पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स हला ई सब जिंस हमर एठु जाउथले एक्सपोर्ट होतले आ छडा आसले सोना रूपा आउ विन ए हॉर्सेस गोल्ड स्वीट वाइन ए सब जिंस इंपोर्ट होतला Then Sangam era period slowly witnessed the decline during the 3rd century AD. The Kalabhras occupied the Tamil country post Sangam period between 300 AD to 600 AD, whose period was called interregnum or dark age by the earliest historian. कहीं 600 AD परे पुनी संगम ता पुनी मैं तमिल रो जो किंगडम गुडा थिले से माने पुनी ग्रो करियो लागले कालभ्र छाडला परे से पुनी बसी गले ताबरा पढिबे एतले फ्यूचर देखिया संगम रा फ्यूचर अछि आमे जदी subsequent class देखिए but these are all about संगम ओके जदि संगम रो आसिला तो तमे मैनेज करि परिबो क्वेश्चन गुडा थ्रू दिस ताको आउ थ्रू देखि देबो ए ना गुडा के खेल डिफिकल्ट बाकी स्टोरी पाखा के सिमिलर एई कोन जगदा एंथोलॉजी 8 एंथोलॉजी थिले ना से 8 एंथोलॉजी विषय ता सिग्निफिकेंस जाय जदि तमरा एठु नै जिवो गोटे कोन गोटे स्क्रीनशॉट नै जिवो ताहाले तमरा एटा काम हि जिवो एडा को कहिबारे भारी डिफिकल्ट ना गुडा एग्जाम रे एतरे तो पढनी केबे ये है दिस इज ऑल अबाउट संगम एज नेक्स्ट देखिए हमें गुप्ता एम्पायर को देखिए तो दिस इज द रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर देखो पूरा एते बड़ एम्पायर टा पोस्ट मौर्य सो थिला हमरो ओके तो अगेन जेंति मौर्य एम्पायर जेंति मोर एक्सपांड वास्ट एक्सपांशन देला गुप्ता भी सेंति वास्ट एक्सपांशन ऑफ दिस आर द रीजन्स जोटी के साउथ अलग अलग रीजन सब आ एटी कालभ्रस आसी जेतले तोळे जोटा कि हम केतोळे 300 रु 600 AD जाए ओके ओके क्वेश्चन आस्तिला एथरो मेन से भी क्वेश्चन आस्तिला गुप्ता एम्पायर विषय रे दर आंसर कोन वेट देखि देबा हमें थोड़ा थोड़ा देखि था एगुडा पढियो मौका मिलेनी काहे ना अदर इंपोर्टेंट आंसर टाइम को नै जासी हमरो ऑक्युपाई कर दिए एगुडा थोड़े भी देख दिला हम एग्जाम रे काम रे आसी जाइबो चलो द गुप्ता एम्पायर स्पैनिंग फ्रॉम एपिसोड 320 टू 550 कॉमन एरा ओके दिस वाज दैट मेजर पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर खास करके नॉर्दर्न इंडिया विषय हम पढिबा इज ऑफन सेलिब्रेटेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया काहे कि ना गुप्ता जो पीरियड टाइम रे इंडिया जति फ्लोरिश देखिछि हुए तो सेटा भविष्य रे कि आज पर्यंत केबे आउ जति फ्लोरिश देखिनि इंडिया काहे ना ये माने भी ट्रेड करथले कास तो रोमन एम्पायर संगे ए माने भी सुना नै करथले लिटरली गोल्ड भर्ती थिले घर घर गोल्ड से तोड़ थिला देन काहे कि ए पीरियड रे नॉट जस्ट ऑफ वेल्थ कल्चरली साइंटिफिकली आ तमरा और टेक्नोलॉजी आ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टाइम देखिया मनथुला खास करी विक्रमादित्य आ गुप्त जो चंद्रगुप्त ए माने टाइम रे ना घरे कह जाय घरे माने डोर भी पकन नथुले आ एते धनी थिले माने इंडिया वाज द वेल्थिएस्ट नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस एरा वाज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स फ्लोरिशिंग आर्ट लिटरेचर एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स
which laid the foundation for future development in Indian history. This article तापर छाड़ा निस्ला about Gupta Empire. चलो फाउंडर किए श्री गुप्ता. It stretched across northern, central and southern part of India जोड़ा कि 300 वर्ष पाखापाखि थिला. Then Gupta Empire was called the golden age of India to its achievement in art, literature and science, religion and philosophy. Question is why Gupta Empire is called the golden age? Justify करो तुमको ये सब मेंशन करिया पे पड़ियो ता तळे तीन तीन टा पॉइंट लेखे मेंशन करिया पे पड़ियो जदि मेंस रे आसिला तो. During Gupta Empire India witnessed the renaissance in cultural and intellectual pursuit with significant contribution from figure like Kalidasa in literature, Aryabhatta in science. तांको छोड़ा भी चरक सुश्रुत ए माने भी से टाइम रे आस्थिले. ओके अमर सिंह आ बहुत सारा भी जो कोट पोइट गुड़ा थिले खास करके ए समुद्रगुप्तଙ୍କ टाइम रे से सब ए टाइम रे थिले. Gupta ruler fostered the environmental stability and prosperity facilitating the advancement of various fields leaving the lasting legacy of Indian civilization. History of Gupta Empire देखिबा चलो 4th century AD. This was the period both Satavahanas and Kushanas, who had merged as major political powers in the Deccan and North respectively after breakup of Mauryan Empire, ended with middle and 3rd century AD. Okay, Satavahana में कुशण भी सरले वर्तमान. Next, several minor powers occupied the political spaces and somehow ruling families were emerging. Against the backdrop, the Gupta and a family of uncertain origin began to build an empire beginning with 4th century AD. Then asigala the ancestry and early history of Gupta family are little known and have naturally given rise to various speculations. Various historians have given different ancestry to the Gupta like Vaishya, Brahmin, Kshatriya, Ikshvaku clan. Okay, तांकर actually uncertain अछि ना से को clan राष्ट्रंते तो सब गुड़ा हिस्ट्रियन से कहले कि कोठरू बिलोंग करते. छाड़ो at the end of 3rd century the original kingdom of Gupta comprised Uttar Pradesh, Bihar say region. However, the Uttar Pradesh seems to have been more important province for the Guptas than Bihar because early Gupta coins or inscriptions were mainly found in these states. As per the inscription, Sri Gupta was the founder of the Gupta dynasty and Ghotatkacha was the next follow him and Chandragupta was the first independent ruler. So these are the coins issued by Gupta. Then asila capital कोटा गुप्ता रो पाटलिपुत्र present day Bihar or Patna. Then asila Gupta Empire was central political, economical and cultural hub during the Gupta period. Then known for the strategic location confluence of Ganga to Son rivers. Okay. तो एक सोनटा भी यार ट्रिब्यूटरी गंगा ट्रिब्यूटरी जोटा कि आमर रही जाइए कोटू अमरकंटक हिल पाखर जोटा आम महानदी में जो नर्मदा हिल जो रही जाइए एपटे महानदी रही जाइए से एरिया सोनभद्रा जो रिवर अच्छे से भी बोही और ये जाए गंगारे मिसछन्ति. तो यही रीजन खास कर गुप्ता रीजन थिला. The city's significance was further enhanced by its role promoting the learning, artistic improvement achievements which flourished under the Gupta rule. The founder of Gupta Empire was Chandragupta I because यही independent king थे. Who ascended through in 320 common era. Chandragupta I established the Gupta dynasty and laid the foundation of golden age of Indian history. His reign marked the beginning of significant advancement in the fields including science, art, literature as we read before. So ruler देखिए टिके किए थिले. Chandragupta I was the son of Ghotatkacha. First was Srigupta, then Ghotatkacha, then third was Chandragupta I. Because the real founder of Gupta Empire, he married Lichavi princess Kumara Devi. Then after his declaring his independence in Magadha, he enlarged the kingdom with the help of matrimonial alliance with Lichavis. We read this. Then there need to be concrete evidence to determine the boundaries of the kingdom. However, it assumed the power of Bihar, UP and Bengal. Then Chandragupta I was said to have started a new era 319 to 320 which marked at the date of his accession. This Gupta Sambata jemti amar thila.
एरा अच्छे सेटा गुप्त संपत्ति कह जाए आ गुप्त एरा बोली कह जाए पूरा शाक संपत्ति थिले ना तांकर कैलेंडर शाक एरिया सेठी गुप्त संपत्ति एरिया ए पर्टिकुलर ईयर टाको कह जाए देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त द किंगडम ग्रू इनटू एन एम्पायर गोटे साम्राज्य हो गला सेठू देन समुद्रगुप्त आसे तांका परे ये पाखापाखि 20 वर्ष 15 वर्ष शासन कला समुद्रगुप्त आसिले चंद्रगुप्त सन द सक्सेसर समुद्रगुप्त एनलार्ज द गुप्त किंगडम एनॉर्मसली चंद्रगुप्त 1 समुद्रगुप्त देन चंद्रगुप्त 2 आसबे हिज कोर्ट पोएट हरिसेना ये बन रखो तुम हरिसेना रोड द ग्लोइंग अकाउंट ऑफ मिलिटरी एक्सप्लॉइट इन द लॉन्ग इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड एट द अलाहाबाद द पोएट एनुमरेट्स द पीपल एंड कंट्रीज दैट वर कॉन्क्वर्ड बाय समुद्रगुप्त तो समुद्रगुप्त विषय पूरा डिटेल अकाउंट लिखाई हमर ए इंस्क्रिप्शन अलाहाबाद पिलर स्टोन पिलर ओके अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रे समुद्रगुप्त विषय पूरा मेंशन अछि कि तांकर केमे तांकर एक्सपेंशन थिले तांकर विषय रे और सी देन हरिसेना रेफर टू हिम एज कविराज हरिसेना को कविराज रखा जाए एंड ही मेंट दैट he was not only a pattern and poetic arts but he is also a poet himself samudragupta also assumed the title vikramanka okay he performed ashwamedha yajna and first ashwamedha yajna after pushyamita shunga Mauryan पर जो shunga आस्तिले सी होजने सी भी अश्वमेध यज्ञ करथिले देन ये आस्तिले ये भी अश्वमेध यज्ञ The places and countries conquered by Samudragupta can be divided into 5 groups. कौन Samudragupta's prestige and influences spread even outside India according to Chinese source. Samudragupta granted यहाँ को तो Napoleon of India बोली कहा जाए ना इतने तांका expansion थिला permission to Ceylon king Meghavarman to build Buddhist monastery at Bodh Gaya. Then as well, according to the inscription of Allahabad, Samudragupta never experienced defeat. Se kebe bhi hari nahanti, and he, in this sense, he is called Napoleon of India. Samudragupta unified the greater part of India under him, and his power was felt in much larger area. Samudragupta laid the military foundation of Gupta Empire, and his successor built upon his foundation. Then as well, Prithvivaha Pratham Veer was the title समुद्रगुप्त ता समुद्रगुप्त खाली इति जानो तो एक्सपेंशन में प्रसिद्ध और तांकर हरिसेन होचनी कोर्ट पोएट आ अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डाउट मन रखो देन असिगला एंड ही वाज आल्सो ए पोएट हिमसेल्फ देन चंद्रगुप्त 2 ओके तांकर पाखापाखि 50 इयर्स तो शासन कला चंद्रगुप्त 2 380 कॉमन एरर टू 415 द रेन ऑफ चंद्रगुप्त 2 सॉ हिज हाई वाटरमार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर he extended his limit from empire through marriage alliance and conquest गोटे जिन खाली मन रखो या टाइम रे ए जो गुप्त जो आस्तिला ए वर्ष यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन आस्तिला कि समुद्रगुप्त टाइम रे गोटे फेमस चाइनीज पिलग्रिम आस्तिले और चाइनीज ट्रैवलर आस्तिले तांकर नाम कोन की कहबो ओके he was a famous Chinese traveler तांकर टाइम रे आस्तिले तांकर भी अकाउंट जुडा मिले से विषय भी समुद्रगुप्त विषय रे बहुत जिंस मिले एटी देखिए आगु जो थिबो सेटा भी हम पढि देबा एई वर्ष यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी रे आस्तिले एई वर्ष जे कहा पीरियड रे आस्तिले फाहियन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त 2 saw high watermark of the Gupta empire. Okay, the Gupta inscription mentioned Chandragupta II as Samudragupta's successor. However, based on the literary source, based on the literary sources, some copper coins and inscriptions, it is suggested that the successor of Samudragupta's other son, Ramagupta Vishakadatta's drama Devi Chandragupta mentioned that Chandragupta II killed his elder brother Ramagupta and ascended the throne. तो बेसिकली स्टोरी एटा थिला देवी चंद्रगुप्तर एटी मेंशन अछि ना कि बड़ भाई को ए साक रूलर थिले से तांको अरेस्ट कर देले किबा किडनैप कर देले किबा हराई देले हारि कि तांको रानी को से नै गले आ ताको बंदी कर देले ताको ए रामगुप्त को तापर चंद्रगुप्त 2 जी आस्तिले प्रोटेस्ट करले साक को हराइले
क्वीन ध्रुवदेवी को से बंचेक नेले एंड सक्सेसफुली साका को हराइले आ निजे ध्रुवदेवी को बाहाले आ बड़ भाई को मारदेले बोली कहौ जे देवी चंद्रगुप्त रेटा मेंशन अछि स्पेसिफिक अदर टेक्स्ट लाइक हर्षचरित्र काव्य मीमांसा एटसेट्रा आल्सो रेफर टू दिस एपिसोड हर्षचरित्र बोली लिखा जी एटा के लिखते बाणभट्ट some copper coins bearing the name of Ramagupta have also been found an inscription on the pedestal of some Jaina image found Vidisha bear the name of Maharaja Ramagupta. Similarly, Dhruvadevi described as the mother of Govindagupta, Chandragupta's son, in Vaishali's seal. तो देवी चंद्रगुप्त मन रख किए लिखिछन विशाखा दत्त आमे पढिथिले इटा वेरी इंपोर्टेंट Chandragupta II entered into matrimonial alliance with the Nagas by marrying Princess Kubera Naga, whose daughter Prabhavati was later married to Rudrasena II, a Vakataka family. मन रखो निजे चंद्रगुप्त को झियो वकटक किंग रुद्रसेन को बाहाइथिले एंड चंद्रगुप्त एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वकटक किंगडम इन सेंट्रल इंडिया तो टिके तळगु जो वकटक आसीबो देन ड्यू टू his control over Vakataka kingdom, Chandragupta II conquered the northern Malwa and Gujarat, which had been under the Saka's rule for 4 centuries. The conquest of Saka was most important event of Chandragupta II reign. He destroyed the Saka chieftains Rudrasena III and annexed the kingdom. तो चंद्रगुप्त II साका को हरैथिले तांको साकारी बोली भी कहा जाए सेतिमे बोली कि ना ही conquest gave Chandragupta II western coast which is famous trade and commerce. This contributed to the prosperity of Malwa and chief city Ujjain seems to have been Chandragupta's second capital. गोटे पाटलिपुत्र थिला बर्तमान उज्जैन भी सेकंड कैपिटल हे गेला बिकॉज़ ए जो रीजन थिला ओके एमती किसी अच्छी तो गुप्ता एम्पायर टोटली एम थिला तो ये आसला वकटक किंग आउ साका को हरेकी बर्तमान एई पूरा से पाई गले तांकर सी पुरटा पाई गले उज्जैन तो इथे जान लो मध्य प्रदेश रे चंद्रगुप्त II is identified with King Chandra whose exploits are mentioned in the Mehroli iron pillar inscription. एटा कोडी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली रे एटा आयरन पिलर टा अछि मेहरोली एटा ओके एटी चंद्र बोली कहै चंद्रगुप्त II को according to his inscription Chandra across the Sindhu region of 7 rivers and defeated Balhikas who were defeated Bactrians तो बैक्टीरियन को हरे थिले some scholars identify Chandragupta II with the hero of Kalidas's work जोटा कि रघुवंश विषय थिला because Raghu's exploit appears comparable with the Chandragupta. The Mehroli inscription was also mentioned Chandragupta's victory over enemy of Ganga. ए पिलर जो स्पेशलिटी है आज पर्यंत सेटा है पाखा 2000 इयर्स है सेटा वर्तमान भी जंग कि रस्ट एपर्यंत है सेमती अच्छी आउ से टेक्नोलोजी आश्चर्य कथा आज जाए 2000 इयर भितर से टेक्नोलोजी एवं जाए डेभलप हो पारे कि सुनार केमी रस्ट होनी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन केमी होनी से जिनसा आज पर्यंत डेभलप करें स्टील स्टेनलेस स्टील एगुड़ा डेभलप कराई ये टेक्नोलोजी वर्तमान पर्यंत डेभलप होनी तो ये जना से मेटालर्जी केते हमर प्रोग्रेस थिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे लेवल ऑफ प्रोग्रेस हम एठू गेस कर परबा देन चंद्रगुप्त II adopted the title विक्रमादित्य which had been first used by Ujjain ruler 5158 BC रे थिला एठी विक्रमादित्य थिले हेतळे त मन रखतिबो जे कि विक्रम बेताल स्टोरी हीरो देन अच्छा मु कोन कहथिले हेतळे चाइनीज फिल्म फाइएन का टाइम रे कहथिले मते टिके एक्सक्यूज करबो मु बते कहथिले आक टाइम रे चंद्रगुप्त I समुद्रगुप्त टाइम कहथिले आई एम सॉरी तो ही वाज चंद्रगुप्त II टाइम रे मु भी आश्चर्य काहे देनी तंग नाटा तो चंद्रगुप्त II ओके विक्रमादित्य और से होजन समुद्रगुप्त ओके विक्रमादित्य को टाइम रे आस्थिले चाइनीज पिलग्रिम फाहियान 399 AD रु 400
14 पर्यंत पाखाई 15 वर्ष से इंडिया रहिले रोट एलाबोरेट अकाउंट्स ऑफ पीपल्स लाइफ और से निजे भी एई विक्रमादित्य को विषय निज बही रे बहुत लिखिसंती इन हिज मेमोयर ही विविडली डिस्क्राइब द प्लेसेस ही विजिटेड एंड स्पेसिफिक सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट रिलेटेड टू देम हाउएवर he does not mention king's name in his account. He speaks highly of the kings of Madhya Desha and region directly ruled by Gupta monarch and his period. से खाली नाटा लिखने थे बाकी सब आंको विषय रे बहुत बढ़िया से अकाउंट से दे थिले. Numerous scholars adorn Chandragupta II's court at Ujjain, collectively known as Navaratna or Nine Gems. Chandragupta II was the first ruler to assume परम भागवत टाइटल. तो बर्तमान कुमार गुप्त तांको सन आसिले 9 जेवल मानक नाम भी देखियो हमें. चंद्रगुप्त II वाज सक्सेसड बाय कुमार गुप्त. ये आकर फेमस जिंस होचन ये जदी हम देखियो वर्तमान रो जो कोन देखछंती चलो से आसिल देखियो. देन कुमार गुप्त द दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जोटा कि refers to him as Maharaja Dhiraja and show that the appointed the governor Uparika and Pundaravardhana Bhukti being the biggest administrative division of this empire. The last known date of Kumaragupta is from silver coin dated 455 AD. Then the wide area over which his inscription was distributed indicates that the rule over Magadha, Bengal and the east of Gujarat and the west. He has been suggested that the last year of the reign, the Gupta Empire faced foreign invasion of Han invasion, which checked the effort of Skanda Gupta. Then he maintained cordial relations with the Vakataka, established through matrimonial alliance. Earlier he established the Nalanda University in Bihar. Okay, he जिनसे हम कहबे जानतली को कुमार गुप्त को स्पेशल अचीवमेंट होची से तांको टाइम रे तो हंस रो इन्वेजन हेतिला और ता एटा होजे फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी जदी के फाउंड करजन सी इज द कुमार गुप्ता द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी which established during this period. Then actually Skandagupta succeeded by Kumaragupta and the last powerful Gupta monarchs. He assumed the title of Vikramaditya, Devaraja and Sakavan. Then Skandagupta's most significant achievement was defeating the Pushyamitras and the Shunga dynasty and throwing back the Huns who was troubled the Gupta empire since his father's reign. These wars adversely affected the empire's economy. Gold coinage, Skandagupta bear testimony to that. Then Skandagupta minted fewer types of gold coins than earlier rulers. He appears to have been the last Gupta ruler to mint silver coins in the western India. Then our famous आसीगला इटा काली पढ़ले आ विषय ए भी देख देबा जोटा कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन. ये होची जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन कौन दिखाओ जी. However, the Junagadh inscription of his reign tells us about public work undertaken during his time. The Rudrasena lake, it amon rakha, Sudarshan lake, sorry, jeki amra built during the modern time burst due to excessive rain and his governor Pamadatta repaired it Kaharata Skandagupta time. This indicated that states undertook the task of public work. The last known date of Skandagupta was 467 AD from his silver coins. Then the latter Gupta, that time is the successor of Skandagupta, the division of Gupta empire into many parts has already begun during towards the close of Skandagupta's reign. Thus, the inscription from Western Malwa recorded the Skandagupta's last year does not refer to him, but some other rulers beginning with Chandragupta II. Inscriptions mention some Skandagupta's successor J.K. Buddhagupta, Vinayagupta, Vanugupta, Narasimhagupta, Beladitya, Kumaragupta II and Vivigupta is but they were not that famous as
these 5 earlier Gupta rulers. It is unlikely that they all ruled over vast empire as Chandragupta II, Kumaragupta I had done earlier. The Gupta continued his rule until about 550 AD, built by then, and their power already becomes insignificant. छाड़ पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन देखिबा बहुत पीसफुल रूल थिला बोले सुनिया मिलछि ताकर पॉलिटी केम थिला डिसेंट्रलाइजेशन डिवोल्यूशन पावर सेट थिला. The king was advised by the council of ministers responsible for various administrative and military duties. The range of minister officers managed military and other affairs under the king's directions. The Gupta Empire did not have any overly elaborate bureaucracy due to the effective decentralization of administrative authority through land grants and friendly Samanta contact with subdued neighbors. ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ନଥିଲା. ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ନବରତ୍ନ ଦେଖିବା. ଏଇଟା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର 9 ଜେମ୍ସ. ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଫେମସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ ଯିଏକି ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଗଲେ ଅମରକୋଶ ଅମର ସିଂହ ଯିଏକି ଅମରକୋଶ ଲେଖିଛନ୍ତି. ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବେସିକାଲି ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ. ଏବେ ବି ତୁମେ ମାରିଦେବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆସିଯିବ ଅମରକୋଶ ହେଲା. ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡିକ୍ସନାରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଅମରକୋଶ. ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଫିଜିସିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର Dhanvantri was the famous physician. Then Shanku was the architect. Okay, Vararuchi was the grammarian and Sanskrit scholar. Then has the Vettel Bhatta जे कि मैजिशियन जन थिले. और तापर हेले जो कि हरिसेन होचंदे कोर्ट पोएट जी कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति. ओके, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. ओके, ये प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग माने होची अलाहाबाद हम सेटू बुझिबा. देन कहापंक. ओके, जे कि गुडा एस्ट्रोलॉजर थिले. और लास्ट बुझिले वराह मिहिर. ये होचंती जणे ये भी मैथमेटिशियन बोली कहि परबा, एस्ट्रोलॉजर भी कहि परबा और एस्ट्रोनोमर भी कहि परबा. wrote 3 important work गुडा होची पंच सिद्धांतिक, बृहत संहिता एंड बृहत जातक. ओके, এটা মনে রাখ. এগেন অথর অফ বুকস ভিতরে যে আসিলা পঞ্চ সিদ্ধান্তিক, ব্রহ্ম ଆମର ବୃହତ ସଂହିତା ଆଉ ବୃହତ ଜାତକ. ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ବୁକ୍. ତ 9ଟା ଯେମିତି ସରିଲା ଗୁପ୍ତ ଟାଇମ୍ର. ଦେନ୍ ସାମନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ. ଦ ପାୱାର ୱାଜ୍ ଡିଭଲ୍ଭ. ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସାମନ୍ତ, ଏଇଟା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ. ଦ ପାୱାର ଡିଭଲ୍ଭ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଅଥରିଟି ଗିଭିଂ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପොଲିଟିକାଲ ହାଇରାର୍କିଜ୍. This is evidence from the Allahabad pillar inscription which noted that Samudragupta did not kill and destroy his enemies but brought them under suzerainty. In the Gupta Empire, the Samanta was neighboring subsidiary ruler, a friendly tributary of a Gupta overlords. The land grants decentralization was also affected via various land grants which granted persons and institutions varied immunities and concessions. So this is one reason, unlike Mauryan period, Gupta Empire had manageable bureaucracy. यहाँ टाइम रे manageable bureaucracy थिला. और ता reason भी थिले कि ए land grant system और ए सामंत system जोगो तांकर किसी elaborate bureaucracy दरकार पड़न थिला. ओके, तो तुम खाई दो तो. Then देखिए, the Gupta Empire administration was highly centralized. The king was at the top, wielding absolute power and often guided by council of ministers. देखो याकर भी किमती जिन तांकर जने मंडल थिला, ऊर थिला. तो याकर सेमती भुक्ति. ओके, the provinces, the empire was divided into. तमे बांधो. Okay, the empire was divided into bhuktis, each governed by uparika, a provincial governor, and further subdivided into vaishyas, जोटा कि vaishyas माने district, and managed by vishyapatis. मन रहिला फर्स्ट होची तांगा एम्पायर प्रोविंस को होची भुक्ति.
भुक्ति तळକୁ जदि आसीबो विशेष ओके भुक्ति को जी मैनेज करथले तांको नाल उपरिका एंड विषय को विषयपति This was the administrative system. The local administration involved village assembly, which were essential managing the local affairs. The Gupta maintained a strong bureaucratic system and relied on feudal lords and guild. तो feudal lords टा मन रखो ताको सामंत बोली कहा जाए. The regional governance and tax collection. This system contributed to the Gupta Empire's long-lasting stability and prosperity. Economy देखिए. Economy during the Gupta period was characterized by flourishing trade, well-functioning guild system, flourishing manufacturing industries, and high standard of living. Of course, agriculture was the main occupation of the people, but other occupations like commerce, the production of crafts had become specialized occupation and different social groups are engaged. मन रखो वर्तमान हम देखुछन्ते बेगर्स देखुछन्ते बकना बीपीएल लोक देखुछन्ते बिलो पॉवर्टी लाइन ओके गरीब क्लास देखुछन्ते तो गुप्ता एम्पायर उडे मिथिला यू कैन इमेजिन से सोसाइटी रे केही गरीब नथिले सब धनी ही थिले आ समस्त गोल्ड समस्त मार एते भर्ती थिला आ सेतोले एक्चुअली गोल्डन एज बोली एथि में कहउ जे कि समस्त सेतोला समृद्ध थिले आ समस्त देखो लिविंग स्टैंडर्ड विथ हाई लिविंग स्टैंडर्ड सेतोल देखिया मिथिला वर्तमान से समय वर्तमान से जिनसा अवेलेबल नहीं तो गिल्ड सिस्टम ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन द गिल्ड इज एन एसोसिएशन ऑफ आर्टिशियन मर्चेंट्स हु ओवरसी द प्रैक्टिस ऑफ द क्राफ्ट इन पर्टिकुलर एरिया तो किसी आर्टिशियन और मर्चेंट किसी पर्टिकुलर एरिया रो से जगह से माने आर्ट देखुथिले एगो गिल्ड सिस्टम सेंट्रलाइज थिला ना सेंट्रलाइज थिला कोटा गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन रा देखो डिसेंट्रलाइज तो थिला तुम कहली भुक्ति आ विषय कथा कहली डिसेंट्रलाइज आ भुक्ति रो भी थिले हमर के उपरिका थिला आ एडी विषयपति थिले से माने डिसेंट्रलाइज करिया पे हेल्प करथुले किंतु जहाले भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किंग मान का अंडर थिला से जहाले भी सेतलो मोनार्किकल सिस्टम ना तो तुम बहुत कहि परिबो ओके डिसेंट्रलाइज माने कोन डिसेंट्रलाइज माने पावर तांको दिया हे जिवो पावर सेंटर टा एडी थिला किंतु मैनेज करथुले सही माने ओके तो डिसेंट्रलाइज थिला ही decentralized monarchical system but king होचन तांकर देखो द किंग वाज एट द टॉप ताको एब्सोल्यूट पावर थिला तमे कोन कहबो आउ गाइडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगेन इट डिवाइडेड हला इट आल्सो तांको डिसेंट्रलाइज Then as the Gupta era, the activities of guilds increased considerably. Then guilds came into acquire considerable autonomous power. These trade guilds were both political and economical influential. Guilds could control one trade in the province and wield economic dominance. Moreover, they became politically influential and also started maintaining militias. देखो ताकर जो आर्टिशियन और मर्चेंट थिले समान को पावर ट्रेड पावर थिला समान निजर से एरिया रो इकोनॉमिक डोमिनेंस मान मेंटेन कर परथुले आ धीरे धीरे ताकर मिलिटरी रखिया स्टार्ट कर देले एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हे गेले तो दिस इज द गिल्ड सिस्टम ओके देन आसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी एथरो ओपीएससी रो मेंस क्वेश्चन ता जीएस 1 रो कि गुप्ता रो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एतिक त आंसर थांदा द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुप्ता एम्पायर एज फॉलोस कोन थिला remarkable advancement marking the period golden age of intellectual development scholars like Aryabhatta Barahmihira the significant contribution of mathematics and astronomy Aryabhatta की जीरो रा आविष्कार करथिले and decimal system as being particularly influential in the medicine रे सुश्रुता और चरक authored seminal text and surgery in herbal medicine बाय द वे ए दीटा ना हम एठी पढुचंती हमरा जो कुशण रे भी पढुचंती याको ओके तो एडी कंफ्यूज कि जेतो कुशण गुप्त भी कंटेम्पररी भी थिले गोट टाइम रे तो ये कहार जागार सेटा किंतु का कुशण रे भी काली एठी पढथिले हम ये दिरे ना आ गुप्त रे भी हम एनसीईआरटी बहरे निजे मेंशन अछि दिन करना तो बट हम मेंशन कर परबे एग्जाम रे
सुश्रुत संहिता चरक संहिता मेंशन करछंती या को फादर ऑफ सर्जरी बोली कहा जाए या को फादर ऑफ मेडिसिन बोली कहा जाए then the period was show advancement in metallurgy iron pillar of delhi okay एटा भी गोटे मेंशन करबार थिला एंड सोफिस्टिकेटेड मेटल वर्किंग टेक्नोलॉजी भी थिला देन तांकर गुप्तर गोल्ड कॉइन थिला सिल्वर कॉइन थिला ओके आउ कोन थिला तांकर जो these are the technological advancement जोटा के with evidence this innovations reflects Gupta's era profound impact on science and technological progress. So this is the account of the question given in OPSC. और एडम UPSC भी आसी UPSC मेंस रे भी आसी ये तां कॉपी कर दी ए वर्ष पकई थिले. Then a society in Gupta period. The development of society in Gupta period as follows: the Chandragupta II, the pattern of art and literature. Samudragupta was represented on his coins. ओके निजे समुद्रगुप्त बीणा प्ले करते से जना जाए समुद्रगुप्त निजे भी जड़े लिटरेचर आउ आर्ट रो खास करके म्यूजिक रो भी से जड़े बहुत बड़ा ही वाज निजे भी गोटे राइटर थिले ऑथर थिले बोली कहा जाए आउ खास करके बीणा भी बजाती ए बीणाटा की Chandragupta II is credited in maintaining the 9 luminaries or great scholars inspired देखिले सेठी हमर सब नवरत्न मानकु हम के रखले चंद्रगुप्त II ओके in ancient India art was mainly inspired by religion. Few survivors of non-religious art from ancient India exist. Buddhism gave great impetus to the art of Mauryan and post-Mauryan period. It led to the creation of massive stone pillars, the cutting of beautiful caves and raising high stupas. Yes, Gupta time रे हमरो जो cave थिला एलोरा एंड अजंता सेटा भी यांको टाइम रे ही बिल्ट हेतिला. The stupas appeared as dome like structure. देखि जे स्तूप गुडा सब हम पढिबा स्तूपर आर्किटेक्चर देखिथिबो एमति किछ थाए ओके देन आसीगला आर्ट एंड आर्किटेक्चर Gupta art and architecture represent a pinnacle of classical Indian artistic expression characterized by refinement and grandeur. Then Asigala Gupta's sculpture is renowned for its elegant, graceful forms and intricate detailing, exemplified in works such as Ajanta and Ellora caves and Udayagiri caves. Then Asigala the period is marked by the development of temple architecture with the emergence of Nagara style, okay, characterized by curvilinear shikhara and spire. Nagara style architecture ta एमित है, okay, ता शिखर टा कर्व एक था, okay. Then आसीगला in Ajanta cave, Gupta painting displayed vibrant colors and integrate narrative of Buddha's Jataka tales. The era's art and architecture reflected the cultural and religious dynamism of this period and laid the foundation of subsequent artistic tradition in India. Next देखिए literature. Gupta literature कौन extra अच्छे? जो famous जिनसा लग रहा है कालिदास का creation गुड़ा का मेघदूत है ला शकुंतला अभियान शकुंतला एटी दुष्मंत आ शकुंतला विषय रे अच्छी जो स्टोरी देन मेघदूत शोकेसिंग द रिचनेस ऑफ पोएटिक ड्रामेटिक आउ कौन अच्छी संस्कृत लिटरेचर और ड्रामा सिस्टम रे फ्लोरिश हेतिला. The era also saw the creation of important epic and devotional texts including the portion of Mahabharata, Ramayana as well as philosophical works authors like Aryabhatta आउ बराह मिहिरंकर भी जो टेक्स्ट आस्तिला on astronomy and on mathematics. Gupta literature is characterized by the use of sophisticated language, intricate poetic form and thematic diversity reflecting the cultural and intellectual vibrancy of the period. The inscription, Gupta inscription गुड़ा important again देखे देवा. Gupta inscription was crucial historical sources of Gupta period,
highlights of the administration, then inscribed various materials such as stone, copper plates, pillar, and this inscription documented royal edict, land grants, and religious dedications. Notable examples include Allahabad pillar edict of Samudragupta, जोटा कि हमर प्रयाग प्रशस्ति बोली कहजे, जो लिखा है जे Allahabad military conquest and accomplishment. आउट इंस्क्रिप्शन अछि जो पिलर इंस्क्रिप्शन कोट जेटा मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन विषय भी आम लिखिपर. द गुप्ता इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड valuable information about Gupta empire and political and social organization and spread Hinduism administrative practice of Gupta empire. देखो बेसिक किछ नै सेही जिनिस गोटे होछि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मन रखियो, आउटे आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मन रखियो. देन आसला डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, हुना इन्वेजन. ओके, हुनस इन्वाइट करले द सक्सेसर जो चंद्रगुप्त II थिले हैड फेस द इन्वेजन ऑफ हुनस इन सेंट्रल एशिया in the second half of the 5th century AD. Okay, although Gupta like Skandagupta initially tried to effectively stem the march of Hunas into India, the successor provided जो पर असली समान weak थिले, and the Hunas invader were excelled in the horsemanship and possibly in the metal stirrups. Then I said they could move quickly, and being excellent archer, they seem to have attained the considerable success in Iran and India. Administrative weakness thila Gupta empire policy of conquered areas of was to restore the authority of the local chiefs of the king once they have accepted the Gupta suzerainty. तो ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ restore କରିଦେଲେ. Then no efforts was made to impose the strict and effective control over the region. That hence it was neutral, and whenever there was a crisis of succession of weak monarchy within the Gupta empire, the local chiefs could re-establish an independent authority. Third, एटा किछि प्रॉब्लम ना, धीरे धीरे सब डिसेंट ताकर टू बाहर ही जिबा लागिले. that created the problems almost every Gupta king and reinforced his authority. The constant military campaigns were the strain for the state treasury. Towards the end of 5th century AD, the beginning of 6th century AD, taking advantage of the weak Gupta empire, many regional powers accepted the authority and due course declared their independence. Then feudatory rise. This is another reason. The Gupta empire was further undermined by the increase of feudatories, जेटा को सामंत बोली कहा जाए. Issue of land grants. Gupta empire may have found it difficult to maintain the large professional army due to the growing practice of land grants and religion in the purpose which bound to reduce revenue. Then decline of trade भी धीरे धीरे decline करिया लागला, कहीं ना तंगा हाथरू गुजरात मालवा भी हाथरू पड़े गला. The migration of guild of silk weavers from Gujarat to Malwa and their adoption of non-productive professions show that there was a little demand of cloth they produced. Besides the region quoted above, division within the imperial families, concentration of power in the hands of local chiefs and governors, and loose administrative structure contributed to the disintegration of the Gupta empire. Then asla importance of Gupta empire. कौन importance जहाँ थिला से यहीं लिखि दिया. तांकर टाइम रे से कोर्ट पोएट important, तांकर से जो आर्ट साइंस लिटरेचर से गुड इंपोर्टेंट. ता छडा किछि खास इतरे नाही. खाली किंग गुडा मन रख. ये थिले पाखे 15 वर्ष चंद्रगुप्त I, समुद्रगुप्त. ओके, देन रामगुप्त ये ब्रीफ पीरियड पे देखा जी 5 वर्ष में थिले. देन असले चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य II. देन असले कुमारगुप्त जको महेंद्रदित्य बोली कहा जाए. देन स्कंदगुप्त. ये पाखापाखि देखाऊँ तुम 150 रु 200 वर्ष पर्यंत और 150 वर्ष अकाउंट पूरा क्लियरली देखाऊँ. देन लैटर गुप्त ये सब माने लैटर गुप्त थिले. ओके, तो बुद्धगुप्त was the last emperor of Gupta who presented unity. When he passed away, Hans safety entered into Sialkot region of eastern Malwa. So these were all about Gupta. Okay, आमे काली देखिबा हर्ष देखिबा और लैटर गुप्त देखिबा. अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एमदी करी आमे वर्तमान धीरे धीरे मीडिएवल हिस्ट्री को जीवा. तो ट्राई कर समस्त प्रेजेंट रहा पे और जो मान नाहंती से माने हमरो रिकॉर्डिंग देखिबे. ओके, आ जदि क्वेश्चन आसले ट्राई करो एगुडा रिवाइज करबो. जेबि छोट छोट बही गुडा अछि, खास करके हमरो तरुण गोयल गोटे बुक अछि. आउट तमर देखि आउट बुक अछि लुसेंट जीके.
ओके या छड़ा जी जहाँ बही पढ़ुछ पढ़ी पार है आ एनसीईआरटी बुक सब अच्छी बट एतिकी नॉलेज जी मुझे छोटा मिनिमम नॉलेज आ ताको रखिया पे पड़ियो मिनिमम कण याठ अधिक भी बेसी यूपीएससी टॉपर भी पढ़ंतनी ओके दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टेक केयर गुड नाइट